हाँ जी बेटे, so we are going to do exercise 1 of chapter 7 determiners. हाँ जी यशप्रीत, first sentence. Here. Air होता है, इसकी pronunciation is air. It is not a, it is an. अ की साउंड आ रही है बेटा, it will be an. Next हरमन, Accounts assistant. right answer, an accounts assistant. निष्का, निष्का unmute yourself बेटे. Ma'am, हाँ जी. hot tea, there will be no article. Right answer. In third, there will be no article. It will be only hot tea. आपको जो instructions are given उसमें है fill in the blanks with a or an where necessary. So you have to see whether you need to apply any article here or not. So a hot tea will be the right answer. Oh, sorry, hot tea will be the right answer. And next, Sia. A hot cup of tea. Right answer, a hot cup of tea. पहले वाले में हमने टी के बारे में बात की, यहाँ पे वी आर रेफरिंग टू अ नाउन ऑल्सो, कप. सो अ हॉट कप ऑफ टी. नेक्स्ट ईशा. An unit. एन यूनिट. ईशा, जब आप यूनिट वर्ड बोल रहे हैं तो कौन सी साउंड प्रोनाउंस हो रही है बेटा, प्रोड्यूस हो रही है? व्हेन वी स्पीक द वर्ड यूनिट, मैम यहाँ पे कोई नहीं आएगा. मैंने पूछा कौन सी साउंड आ रही है, मैं आर्टिकल नहीं पूछ रही अभी आपसे. जब आप यूनिट वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो कौन सी साउंड आती है पहले? U. हाँ, य की साउंड आ रही है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है, इट इज नॉट अ वाउल साउंड, तो यहाँ पे अ यूनिट आएगा. द राइट आंसर विल बी अ यूनिट. क्लियर? नेक्स्ट जशन. Yes. जशन अनम्यूट करे बेटा. A European country. A European country, right answer. Though the word Europe is starting with alphabet E, but sound क्या है? Y. So it will be a European country, right answer. हाँ जी प्रियांशी. An unusual event. An unuseful event, right answer. Next Mahek. A humble person. राइट आंसर, अ हम्बल पर्सन, बिकॉज जब हम हम्बल वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो ह साउंड आती है, राइट? हाँ जी नेक्स्ट जन्नत. मैम भारत रत्न पे कोई भी नहीं आएगा आर्टिकल. कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इट विल बी भारत रत्न, राइट आंसर. हाँ जी नेक्स्ट अमन. मैम eucalyptus tree. राइट आंसर, इट विल बी अ यूकेलिप्टस ट्री. दिस इज द राइट आंसर. All right, now discussing exercise 2 of chapter 7 determiners. हाँ जी निष्का, speak the first sentence बेटा. About half an hour later, I saw an old lady walking towards her house. She paused for a while at the gate, then she rang the doorbell. Right answer. Beta, be careful, listen to the answers properly so that it becomes easy for you to fill in the blanks if you've not done that. And next, Sia. I am eagerly waiting for the one day international between. मैम इंडिया के आगे कोई नहीं आएगा, श्रीलंका के आगे भी कोई नहीं आएगा. Right answer. The two teams are evenly matched and it promises to be an exciting match. Right answer. Next. Third. Yes. Mahek, बोलिए बेटे. Even Gandhi would find it difficult to pull a country out of a present mess.
Out of Very the sorry. present present tense. tense. On the present. Right answer. Out of the present कंट्री के tense. आगे भी द आएगा ना. हाँ जी बेटा. हाँ जी. Next, let me see. प्रियांशी बोलिए बेटा. Ma'am, yes. The lady who lives in the neighboring house is an architect by profession. She is an Australian married to a European. The two are leading quite a continent life. Contented life. Beta, you said she is a Australian. She is an Australian married to a European. Clear? Okay, ma'am. हाँ जी. Next, Jannat. If you are a privileged child, you must learn to share the good things of the life you have with the poor and the deprived. You must learn to give, for the more you give, the better you feel. Right, बेटे, but there is one mistake. The life के आगे आप कोई article नहीं use करेंगे. Plus, pronunciation of the word is deprived. I repeat. Okay, ma'am. If you are a privileged child, you must learn to share the good things of life you have with the poor and the deprived. You must learn to give, for the more you give, the better you feel. Clear? Yes. हाँ जी Ma'am, बेटा. what is the answer of first blank? It's first में आएगा बेटा. Filling some of its columns was a tough job. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी. निधि बोलिए बेटा. It was an unexciting match. Neither team played well. Right answer. Neither team played well. Next, जन्नत बोलिए बेटा. All citizens should exercise their right to vote. Each vote is important. Every vote is important. Every vote is important. हाँ जी, अमन बोलिए बेटे. Every passenger has to get their baggage x-rayed. Right answer. Next, it's यशप्रीत बोलिए बेटा. Each angle of a pentagon measures 108 degrees. Right answer. Each आएगा यहाँ पे. हाँ जी. Next, I can see दीक्षा बोलिए बेटे. दीक्षा. दीक्षा is not speaking. हरमन बोलिए बेटा. मम्मी ये मुझे समझ ही